गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुँ मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आज आम देखा विजुअल रिसेप्टर उपरे। तो प्रीवियस क्लास में मु रिसेप्टर और रिसेप्टर क्लासिफिकेशन कही। तो आज हूँ आम मेन जोटा पाठ स्टार्ट है जोटा हूँ विजुअल रिसेप्टर। तो आशा रखुची तुमको वीडियो पसंद आसले लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करबो। एवं जो माने भी B.Sc 4th सेमिस्टर पढ़ुच से এই ভিডিওটি बहुत माने लाभ हम एवं से को मु डिस्क्रिप्शन लिंक देदेवि जो थी कि से कंपैरेटिव एनाटॉमी रो टोटाल जहाँ भी क्लास है सब से पाइबे। तो विजुअल रिसेप्टर कौन ता विषय जानिबा चलो। तो विजुअल रिसेप्टर मोस्ट कन्वर्ट द एनर्जी इन लाइट टू एक्शन पोटेंशियल एट लीस्ट इनडायरेक्टली। तार कौन एटी हूँ जोटा हूँ एनर्जी जो लाइट रो जो एनर्जी अच्छी से एक्चुअली एक्शन पोटेंशियल कन्वर्ट होता है। अर्थात आमको आम आखिरे आम किसी गोटे देखिपार जिनटा को आम छवि प्रतिबिंब होता है। ठीक अच्छे। द विजुअल रिसेप्टर और रड और कोन्स डू नॉट सपोर्ट एक्शन पोटेंशियल एटा को मन रखी था है ना। देयर मेम्ब्रेन पोटेंशियल डू चेंज इन रेस्पॉन्स टू लाइट स्टिमुलेट but their membrane contain no voltage gated channel and therefore they cannot produce spike है ना। जेहेतु से कौन मेम्ब्रेन जो अच्छी कौन प्रकार वोल्टेज गेटेड चैनल ना तेणु से स्पाइक को स्पाइक प्रोड्यूस करें ना। तेणु से आम कहीपर कौन प्रकार जो आमर जो पोटेंशियल अच्छी जो पोटेंशियलिटी तार ना कौन ना जे रेस्पॉन्स माने क्या करने रेस्पॉन्स ना लाइट स्टिमुलेट करने ना एक्शन पोटेंशियल बा पोटेंशियल ना। तो एक्चुअली जो लाइट एनर्जीटा को कन्वर्ट करने को पड़े एक्शन पोटेंशियल ताहले कि से माने स्टिमुलेट करि परिबे हैला। देयर आर टू काइंड ऑफ विजुअल रिसेप्टर रड एंड कोन्स सो नेम बिकॉज देयर कैरेक्टरिस्टिक शेप। तो से माने एक्चुअली कोन किंबा रड शेप थिबारु ताकू आमे सेई ता शेप थिबारु ताकू आमे सेई प्रकार ना देइछु। तो देखो विजुअल रिसेप्टर इन द रेटिना। तो रेटिना रे को प्रकार विजुअल रिसेप्टर अछि देखो। Photoreceptor in the vertebrate eye have rod and the broad tubular cell allow black and white vision है। while cone the short tapered cell are responsible for color vision। तो दुई प्रकार vision है जोटा आम ब्लैक एंड व्हाइट vision जब देखिबार अच्छी ताले रड द्वारा आम देखा पाई था कि कलर विजन बा ब्लैक एंड व्हाइट को छाड़देले बाकी जी कलर को जब आमको देखा हेले आम कोन रो साहाय्य नहीं था। ठीक अच्छे। नॉट ऑल वर्टिब्रेट हैव बोथ टाइप ऑफ रिसेप्टर। तो सबू प्रकार वर्टिब्रेट पाखे ये दुई प्रकार रिसेप्टर मिले ना है। रड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन इन लो लाइट है। लो लाइट तो मन रखी था लो लाइट रे से देखा साहाय्य करे है नाइट विजन जोटा। तो बेसिकली जो मैंने राति रे बा नक्चुराल एनिमल्स थे से रड विजन निहाती भाव रड्स थी कहीं से राति रे ही से बेसी गतिविधि होता है एंड प्रोवाइड ओनली ब्लैक एंड व्हाइट विजन। आ कोन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। ईच रोड एंड कोन इज डिवाइड इनटू आउटर सेगमेंट and inner segment that include a nuclear region and a synaptic zone। तो यहाँ हूँ तार डिविजन है। तो देखो आउटर सेगमेंट जोटा अच्छी आर मोडिफाइड सिलिया है एंड आर मेड अप ऑफ रेगुलर स्टॉक ऑफ फ्लैटेंड साकुल और डिस कंपोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन है। दिस साक्यूल एंड डिस कंटेन द फोटो सेंसिटिविटी कंपाउंड मन रखी था। जो साक्यूल बा डिस विषय आम जानिले आउटर मेम्ब्रेन अच्छी जोटा कि हूँ फोटो सेंसिटिविटी कंपाउंड है आ जी कि कौन करे लाइट को रिएक्ट करि थाए। ठीक अच्छे। लाइट को से रिएक्ट करे है इनिशिएटिंग एक्शन पोटेंशियल इन द विजुअल पाथवे। द इनर सेगमेंट आर रिच ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आ इनर सेगमेंट रे बहुत मात्रा रे माइटोकॉन्ड्रिया थाए बा रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया है। तो देखो रड शेप गोटे देखेला है रड शेप को प्रकार एवं से ही रड रे देखो आउटर मेम्ब्रेन तुम जान लो है आउटर मेम्ब्रेनटा ये देखी दियो आउटर मेम्ब्रेन ये रहा आउटर मेम्ब्रेन ये दुईटा है एवं ता भीतर जो डिस्क अच्छी से डिस्क रो शेपटा ये एनलार्ज करके देखेदेला है। तापर देखो ये हूँ आम सेल बॉडी सब तले आम सेल बॉडी पाइल है। तो ये जगह कौन रो भी दे स्ट्रक्चर
तो तापर देख the rod are named for thin rod appearance and their outer segment है आउ कौन देखिए cone generally have thick inner segment and conical outer segment है although their morphology varies from place to place in retina है तो morphology बा outer जो characteristic अच्छे सेटा मध्य vary करि पारे है retina रे थिबा विभिन्न प्रकार स्थान रे विभिन्न प्रकार तार morphological varies करि पारे है in cone the sacula are कौन form in the outer segment by the folding है of the cell membrane but जदि आम रड को देखा रड रे कौन अच्छे डिस्क आर सेपरेटेड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन तो आम ये जब कहीपर दुई प्रकार देख दुई जन को डिफरेन्स देख कोन रे जो आम साकुलाटा कौन साकुलाटा आम आउटर सेगमेंट रे देखुचु जोटा कि फोल्डिंग होगी अच्छी सेल मेम्ब्रेन द्वारा किंतु रड रे जो डिस्क गुड़ाक आम अच्छे से आम कौन देखीचु सेठू एक्चुअली से हूँ कौन सेपारेट अच्छे सेल मेम्ब्रेन ठार बहुत मात्रा रे सेपारेट अच्छे है इन एक्सट्रा फोबियल पोर्शन ऑफ द रेटिना रड प्रीडोमिनेट एंड देयर इज ए गुड डील ऑफ कन्वर्जेंस है फ्लैट बायोपोलर सेल make synaptic contact and several cones and rod bipolar cell make synaptic contact with the several rod तापर देखो नेक्स्ट देखिए हमें there are approximately 6 million cone and 120 million rod in each human eyes है मन रखी तो केते केते रहिला कोन हो आम पाखापाखि 6 मिलियन एवं रड है 120 मिलियन है बट only 1.2 million nerve fiber in each optic nerve. The overall convergence of the receptor through bipolar cell on ganglion cell is about कौन आम जो जब कंपेयर करवा ताहले 105:1 रे आम रेशियो रे जानिबा है तब देखो however there is a divergence from this point on है there are twice as many fiber in the geniculocalcarine tract है as it is the as in the optic nerve है optic nerve भितर पाखापाखि आम कौन अच्छी माने तार दुई गुण आम कौन फाइबर पाइबा कौटी हूँ जेनिकुलोकाल्काराइन रे है एंड इन द विजुअल कॉर्टेक्स जब आम विजुअल कॉर्टेक्स को देखा द नंबर ऑफ द न्यूरॉन कनसर्न विथ द विजन कोड़ा पाखापाखि 1000 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ फाइबर इन द ऑप्टिक नर्व है तब देखा विजुअल रिसेप्टर पर केमोरिसेप्टर कौन है तो देखो केमोरिसेप्टर है केमोरिसेप्टर आर डिफाइंड एज दोज रिसेप्टर which respond most easily to the chemical stimulation है जो प्रकार chemical stimulation हेले जदि कौन रिसेप्टर स्टिमुलेट कला ताको हमें केमोरिसेप्टर बोली कहि परिबा है एक्सटर्नल केमोरिसेप्टर इंक्लूड टेस्ट सेल है एंड olfactory सेल है which gives rise to the conscious sensation to the taste किंबा स्मेल ताला आम ये केमोरिसेप्टर क्या कही पार गोटे हो टेस्ट सेल जे कि स्वाद बारी पारे है आ गोटे हूँ olfactory सेल जे कि कनसर्न है विथ स्मेल सहित है गंध बारे साहाय्य करवा कि स्वाद बारे साहाय्य करवा जो सेलटा कहता है आम केमोरिसेप्टर कही था है इंटरनल केमोरिसेप्टर रेस्पॉन्स टू द चेन सर्कुलेटिंग जोटा आम कौन जोटा आम कहीपर तार पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड आउ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन एंड पीएच सहित है तब देखो they do not give rise to conscious sensation include in this category are carotid body and aortic chemoreceptor and those chemoreceptor in the respiratory and vasomotor center of the brainstem है तब देखो नेक्स्ट होचे हम देखिबा एक्सटर्नल केमोरिसेप्टर प्रथम टेस्ट सेल देखा है तो टेस्ट सेल कौन द टेस्ट सेल इज द केमिकली सेंसिटिव एलिमेंट फॉर द सेंस ऑफ टेस्ट है जोटा कि आम स्वाद बारिबार साहाय्य करे टेस्ट सेल क्लस्टर टुगेदर इन ए स्मॉल यूनिट कॉल्ड टेस्ट बोर्ड है आ बहुत गुड़ाक टेस्ट सेल को मिसिकी आम कहीपर टेस्ट बोर्ड तैयारी है द एवरेज टेस्ट बोर्ड कंटेन 20 or so टेस्ट सेल है
तापर देख चिल्ड्रेन हैव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फंक्शनल टेस्ट बोर्ड है मन रखी छुआ मान पाखे अधिक आम टेस्ट बोर्ड पाइपर फंक्शनल एक्टिव टेस्ट बोर्ड आम पाइपर है द नंबर डिक्रीज विथ एज है आउ जिते आम जी बयस आम बढ़ से धीरे धीरे टेस्ट बोर्डर जो फंक्शनटा से कमिबाकू लगे नंबर कम है सो दैट एडल्ट हैव अबाउट 10,000 functional test board है each test cell is typically columnar in shape and is characteristic by the numerous microvilli which project to a narrow opening at top of the board called the test pore है जोड़ा ओपनिंग को टेस्ट पोर बोली कहा जाए है द बेस ऑफ द टेस्ट पोर आर द क्लोज एंड कॉन्टैक्ट विथ द स्पेशल विसराल आफरेंट स्पेशल विसराल आफरेंट को आम SBA बोली कहि परिबा है फाइबर एंड क्रानियल नर्व जोड़ा क्रानियल क्या सहित जॉइंट होती आम 7 ରୁ 9 पर्यंत जो क्रानियल नर्व अच्छी ता सहित से जॉइंट होती देखिए पापिलर लोकेशन कौन तो देखो टेस्ट बोर्ड आर चीफली लोकेटेड इन द राइज एरिया ऑफ द टंग known as papillae. In addition, taste board are located on the epiglottis, on epiglottis, tonsil papilla, and the other area of the fauces, passage of the mouth to the pharynx. जो लाइनटा अच्छी से तुम टेस्ट बोर्ड बोध तुम जो पापिला अच्छे से तुम लोकेट होता है न्यूमरस स्मॉल fungiform papillae are located over the anterior surface of the tongue है these papillae contain moderate number of board एठी बहुत गुड़ाक boards थाए perhaps as many as 100 per papilla तो पाखापाखि गोटे पापिला रे आमे पाखापाखि केतेटा 100टा boards आमे देखिबा को पाई थाउ है much larger circumvallate papilla form a V on the कौन back of the tongue and contain up to 250 test board each है तापर देखो foliate papilla located behind the circumvallate papilla contain fewer board है तो after innervation of the tongue and fauces जोटा हमें फिगर देखिबा है illustrate that several afferent fiber conduct information from the trunk है तो टंग रो बहुत गुड़ाक इनफॉरमेशन को ये ग्रहण करे है टच नॉट टेस्ट है सेंसेशन फॉर द एंटीरियर 2/3 of the tongue is transmitted over GVA fiber of cranial nerve होची 5 है to the principal sensory nerve nucleus of V in the pons है तो देखो while tactile sensation from the posterior 1/3 of the tongue is conducted over GVA fiber of cranial nerve 9 to solitary tract of the medulla oblongata. तापर देखिबा जदि टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 of the tongue transmitted over SBA fiber है कोडी SBA फाइबर कोडी क्रानियल नर्व 7 रे है व्हाइल SBA 9 फाइबर रिलेट टेस्ट इनफॉरमेशन फ्रॉम द पोस्टीरियर 1/3 SBA 10 फाइबर कंडक्ट टेस्ट इनफॉरमेशन फ्रॉम द टेस्ट सेल इन द fauces all these afferent टेस्ट कंडक्टिंग पाथवे टर्मिनेट एट द कौन सॉलिटरी ट्रैक्ट तो ये जहाँ भी तुम देख जो भी तुम अफरेंट टेस्ट पाथवे सब देख ये सब तक सॉलिटरी ट्रैक्ट पाखे आसिकिना कौन टर्मिनेट हो जाती है तो 4 बेसिक टेस्ट मोडालिटीज है तो 4 बेसिक टेस्ट मोडालिटीज कौन आर जनरली रिकॉग्नाइज कौन कौन स्वीट सॉल्टी सावर आउ बिटर है तापर देखो एविडेंस सजेस्ट दैट ऑल टेस्ट बोर्ड रेस्पॉन्स टू सम डिग्री ऑफ ऑल 4 स्टिमुली है तो नेवरथलेस बोर्ड ऑन द टिप ऑफ द टंग रेस्पॉन्स मोस्ट स्ट्रांगली टू स्वीट है तो बेसिकली जो आमर जो टंग रो टिप पर्सन अच्छी से पर्सन आम स्वीट आउ सल्टी माने स्वीट को आम बारी पारू सल्टी स्टिमुले व्हाइल द केमिकल
giving rise to the sour sensation most effectively stimulate bird along the edge ହେଲା ତାପରେ chemical association associated with the bitter sensation most effectively stimulate the base of the tongue ହେଲା ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ତାର ଡିଭିଜନ୍ ଅଛି ତ ଟଙ୍ଗର ଟିପ୍ ପାଖରେ ସୁଇଟ୍ ହେଲା ତାପରେ ତାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ସଲ୍ଟି ତାପରେ ସବୁଠୁ ପଛରେ ଆସିଲା ବିଟର ଏଗୁଡ଼ାକ ସେ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏରିଆରେ ହେଲା ଦ adequate chemical stimuli for 4 basic test modalities fall into characteristic chemical groups ହେଲା for instance the chemical which gives rise to the जोटा होता है सोर नहीं है ना सावर सेंसेशन आर यूजुअली एसिड है जदि आम सावर सेंसेशन को केमी जानू यूजुअली एसिड द्वारा है द लोअर ऑफ पीएच है जो पीएचटा लोअर हम है तो तेणु तुम देख खटा अंशटा बेसिकाली तार एसिडिटी बेसी थाए तेणु आम जब तार एसिड थी लो पीएच थी ताहले आम सावर सेंसेशनटा जानीपर द मोस्ट ऑफ द टेस्ट सेल are stimulate. Sweet stimulate are usually organic molecules such as sugar, glycol, aldehyde and other. Alkaloid like quinine, caffeine and nicotine is give rise to the bitter sensation. While iodized salt give rise to the sensation we describe as salty. तो ये प्रकार तार केमिकल कंपोजिशन पे आम तार टेस्ट को जानीपारू है तेणु तक आम केमो रिसेप्टर अंडर देवा है इन अदर स्टिमुलेट द टेस्ट सेल विदिन द टेस्ट बर्ड द स्टिमुलेटिंग केमिकल मोस्ट डिजॉल्व इन द सालाइवा है सालाइवा सहित से डिजॉल्व हुए देन एंटर टू द टेस्ट बर्ड तापर से टेस्ट बर्ड को एंटर कला हियर दे स्टिमुलेट द टेस्ट सेल एटा से टेस्ट सेल को से कौन कला स्टिमुलेट कला व्हाइल इन टर्न stimulate the SVA ending the cranial nerve कोटी जोटा होची 7, 9 और 10 को से स्टिमुलेट कला तब देखिए adaptation of taste cell chemoreceptor तो देखो when a taste stimulate is first applied to the tongue the sensation is strong then becomes weaker with time है तो प्रथम जो आम जो खाद्यटा खाई से बेसी टेस्ट लगे धीरे धीरे से टेस्टा कौन जाए कमी जाए यहाँ आम जाचु यहाँ परीक्षा भी करूँ द सावरनेस बिकम्स लेस सावर द स्वीटनेस बिकम्स लेस स्वीट एक्सेट्रा इन अदर वर्ड द टेस्ट सेल अडाप्ट द स्टिमुलस है दिस सब्जेक्टिव अवेयरनेस ऑफ द डिक्रीजिंग सेंसेशन इज पैरेलल बाय द डिक्रीज इन द फायरिंग रेट ऑफ द SBA न्यूरॉन्स तो SBA न्यूरॉन जतकी फायरिंग रेट तार कमिज प्रथम जो आम टेस्ट करवा से कौन हम ट्रिगर कले आम अधिक मात्रा आमको स्टिमुलेट करता किंतु SBA न्यूरॉन धीरे धीरे से ट्रिगरटा को कमेदेव बा फायरिंगटा को कमेदेव कमेदेले कौन अच्छे आमको टेस्टा को सामल्टेनियसली कमवाक लगे है देख टेस्ट डिस्क्रिमिनेशन While test board responds to the 4 basic test stimuli, they do so with different intensities. A particular test board may respond with the high frequency discharge to a sweet stimulus but produce low frequency discharge to the salty bitter and sour stimuli है तो स्वीट पाखे अधिक से हाई फ्रिक्वेंसी डिस्चार्ज करें है किंतु सल्टी बिटर और सावर पाखे से बहुत कम मात्रा रे फ्रिक्वेंसी डिस्चार्ज करें as started previously those responding primarily to the bitter stimuli are concentrated at the base of the tongue तो आम जान टंग रो जो बेस पार्ट बा जोटा आम पोस्टरियर पार्ट रे अच्छी से आम बिटर को टेस्ट करूँ while those responding with the greatest discharge frequency to the sweet salty stimuli are concentrated at the tip है तो यही जगह देख प्रीवियस क्वेश्चन रे एठू गोटे क्वेश्चन आसीथिला है जोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्वीट को आमे को जगह टेस्ट कर जोटा होची हम टिप ऑफ द टंग है मन रखी था यहाँ देख यही पॉइंट रू क्वेश्चन आसीथिला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो देख सावर रिसेप्टर आर लोकेटेड along the edge रे आमे तार सावर रिसेप्टर को जानी पारू
तापर देख टेस्ट बर्ड ए इज ए स्वीट बर्ड है that is when a sweet stimulant is applied a much higher firing rate is initiated in the SBA fiber एटा आम जानले प्रीवियस में तुमको कहली जो फास्ट खाइब से SBA फाइबर कौन ट्रिगर करें फायरिंग करें फ्रॉम टेस्ट सेल देन व्हेन ए बिटर सल्टी एंड सावर stimulus is applied. Taste bud B है on the other hand is a bitter bud because it responds with the greatest discharge to the bitter stimuli है bitter stimuli को से कहते bitter मान कौन पितालिया पिता जिनस खाइले से stimulate करी है the brain probably interpret a given test by the analysis to the discharge ratio on the कौन different kind of test bud stimulate है for example if the firing rate of a bud A is 10 times greater than the bud B when the chemical stimulus is applied the stimulus was probably quite sweet है other hand जब हम देखिबा if the relative firing rate were reversed with bud B responding with the fire rate होचे 10 times greater than the test bud A है the applied stimulus was probably quite bitter है since only message a neuron can carry is an impulse all of which are quite similar है in it follow that the only variable in the pattern of the firing है फायरिंग पैटर्न उपर डिपेंड करुच्ची consequently a possible partial explanation of how the conscious context evaluate a given test stimulus is by analysis of the relative discharge है relative discharge pattern of the 4 basic kind एटा तुम न लिखले भी चलबो एटा एंती किछि तुमर इंपोर्टेंट नाही हैला of taste bud from the part of the tongue and the fauces हैला such an integrated discharge pattern could supply the necessary information to the brain to enable it to accurately sense even the most subtle differences in taste है तो यहाँ तुम किसी लिखा दरकार बुझार से किसी पॉइंट नहीं है तुम मेन जोटा जिन कहीदेली है तो ये जगह से तार स्ट्रक्चर देला टेस्ट रिसेप्टर तार केमती मेकानिज्म होता है तो ये जगह देखो जीभर जो प्रथम टंग कौन सी जिनटा खाइले से टेस्ट बोर्ड को देला टेस्ट बोर्ड से आसला एट को है ये जगह आसला ये कौन से आमर कौन এটা হচ্ছে আমার যেটা হচ্ছে নিউরোপ্যাথিক মানে নিউরন অংশটা এটা হ্যাঁ আচ্ছা এটা তো তুমি জানলো তাহলে কেমতি হইଥାଏ দুইটা জিনিস জানলো গোটে হচ্ছে আমার টেস্টর বিষয়ে জানলো ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କେମୋ ରିସେପ୍ଟର ଉପରେ ଦୁଇଟା ସରି ଆମେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ର ତ ଜାଣିଲେ गोटे हूँ विजन रिसेप्टर जानले आ गोटे केमो रिसेप्टर दुईटा आम जानले तो नेक्स्ट क्लास रे आमे कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ टेस्ट सेल इन द वर्टिब्रेट विषय जानिबा हैला एटा टिके लंबा अछि नेक्स्ट क्लास रे आमे विषय पढ़िबा हैला तो आज पई तो एतिकी थैंक यू।